Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right, super. So we're discussing the first topic, introduction to income tax. In that, lot of interesting points we covered. Especially, we covered the normal tax rates for individual, but special cases are still pending, which we'll discuss today. Are we clear with that, everybody? All of us? चलो guys, आज थोड़ा सा रिवाइज करते पहले उसके बाद चालू करते ठीक है What are the 5 pillars of democracy? Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. ये एग्जाम में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा. 5 sources of income tax law. Income Tax Act 1961. Income Tax Rules 1962. Then Annual Finance Act, Circulars and Notification. What is the last one? Judicial pronouncements. They are basically the rulings given by High Court or Supreme Court. Whatever ruling is given by High Court is applicable in that state. Whatever ruling is given by Supreme Court is applicable for entire India, because Supreme Court is also known as Apex Court. दोस्तों याद है ना ये लाइन? बेटा बोलो बेटा. What is section 4? Chargeability section. What does chargeability section say? Income earned in previous year is chargeable to tax in assessment year. Of course, we discussed that word called income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. What is previous year? Year in which income is earned. Section 234 and section 3. Assessment year with section 7 या 9 फिक्स हो जाओ एक. Sure? या बीच में 8 करेंगे. 9, right. 29, which clearly says assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. दोस्तों याद है? Clear है ये सब? Very good. Then my dear friends, tell me, do we have any exceptions to section 4? Exception का मतलब क्या होता है? Exceptions are those which are against the basic rule. What is the basic rule? Income earned by an assessee during previous year is chargeable to tax in assessment year. For that, there are 5 exceptions. Very, very important. What is the first one? Shipping business of non-resident. Number 2. Individual, person. Person मतलब individually होता है वैसे. But person leaving India permanently or for long time. Number 3. AOP, BOI, AJP. Formed for a short duration or purpose. Coming together क्या होता है? Formed for a short duration or purpose. Next one. Persons likely to transfer property to avoid tax. Last one. Discontinued business. क्या यार सोच के बोल रहे हैं आंसर ये. कमाल कितने पॉइंट्स है? चलो फटाफट बोलो वापस. What first one? Shipping business of non-resident. Person leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Person likely to transfer property to avoid tax. What last one? Discontinued business. Are we clear with that, everybody? What is section 115BB? Casual income like betting, gambling, lottery. Correct, no? क्या rate of tax बेटा? Flat rate of 30%. पता है ना ये flat का meaning क्या है? Exactly. What about unexplained income investments? What rate? 78% is effective rate, but the basic rate is 60% plus surcharge 25 plus cess 4%. Effective rate comes to 78%. Clear, my dear friends? So if there is a non-resident Mr. Ping Pong Ching Chang, age is 64. Which category? Sorry? Normal category. Do we discuss this point, everybody? Friends, speak out. He will still come under what category? Normal category. What is the tax rate for a partnership firm? Straight away 30%. Surcharge will come 12% when total income is more than 1 crore. अरे बेटा बोलो बेटा, याद है ये सब? अरे कल बताया था ना ये चीज, बोलना पड़ेगा. What is section 27? Is every assessee a person? Is every person an assessee? Sure. Assessee means any person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings are taken up for assessment of his income or loss, or any other person in respect of which he is assessable. And assessee also covers deemed assessee. It also covers assessee in default. याद है sir? Deemed assessee example? Agent of a non-resident. बेटा बताया था ये सब मैंने, याद है?
बोलो बेटा. Please, come on, are we clear with all this point, everybody? What is section 231? Person. 172. Shipping business of non-resident. 174B. है क्या? 173. बोलो 173. हाँ फाइनल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. 174. पर्सन likely to leave India. Person leaving India permanently or for long time. Next वाला point है likely to transfer. तूने दोनों mix कर दिया. Likely to leave India. बराबर है ना? So are we clear till this point? Everybody, my dear friends, did we get a clarity on 115BB and 115BBE? Everybody? Chalo. In first chapter, this basic concepts, my dear friends, we have some more interesting points to understand in this chapter, which we'll discuss, and today we'll complete this chapter called Introduction to Income Tax. That is the basic concepts. Are we ready, everybody? All of us? Right. Now I have a small question. Think properly and tell me. So a lot of times when you would have gone to some shop, maybe let's say some cloth store or some store, some shop, at the counter where you pay the cash or where you pay the bill, at that counter, did you find one small box where they'll write it as for the benefit of cows, for the benefit of charitable trust? वहाँ पे एक डब्बा है, देखे ऑब्जर्व किए? वो बंदा बोलता क्या, इसमें पैसे डाल के तू बाहर जाना है वरना तेरे को ठोकेंगे पकड़ के, ऐसा बोलता है क्या? क्या है, ऑप्शन है मैंडेटरी है? ऑप्शनल है. बट इफ यू वांट टू डिपॉजिट, कैन वी डिपॉजिट? Now whatever we deposit, is it income for that fellow? Speak out. Is it income for that fellow? Exactly. Technically we call that as diversion of income. What do we call it? Diversion of income means income is diverted before it reaches the assessee. Classic example is what I told you just now, that at the billing counter there is one small box written as for the benefit of cows. If you want to deposit money in that, you can deposit. And that money is directly diverted to whom? For the benefit of cows. Correct, my dear friends? But imagine he sold a shirt, he got 1,000 rupees. Out of that 1,000, 100 rupees he has spent for the benefit of cows. That is called as application of income. What do we call it? Why I am telling this point? Because diversion of income is a case where income is diverted before it reaches the assessee, which is not an income in the hands of assessee. But application of income is amount is being spent after it reaches the assessee. So that will definitely be income in the hands of assessee. So getting clarity, everybody? Bolo beta. Chalo, heading likho. Diversion of income. Diversion of income. See this line once. एक बार ये देखो ना, एक बार फिर लिखते 2 मिनट. चलो बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे? Diversion of income, application of income. See here. By virtue of an, ये आपका ही नोट्स है, देखो. By virtue of an obligation, income is diverted at what, sir? ये interesting word है. At source, before it reaches the assessee. Application of income, discharge of obligation takes place after the income reaches the assessee. Obligation is on source of income, obligation is on receipt of income. Here diversion of income takes place by what title? Overriding title. Overriding title means वो उसको आएगा ही नहीं, वो सीधा का सीधा divert हो गया कहाँ पे? For the benefit of that cows. So title is not for that person, title is for the benefit of cows. Getting clarity, everybody? This side you see, there is no overriding what? Title. This point is most important. The income is not included in the income of what? Assessee. But income is included in the income of assessee. Last line, income cannot be said to have accrued or arised. But income is said to have accrued or arised and therefore is taxable in the hands of what, sir? Assessee. So are we getting clarity on this point, everybody? Beta bolo beta. So diversion of income is a case where income is diverted before it reaches the assessee. So obviously that is the reason why it will not form part of total income of what? Assessee.
but application of income is where amount is spent after it reaches the assessee. Once it reaches the assessee, it becomes what? Income for assessee. So getting clarity on this point? Everybody, let's write 2 lines in our book. क्या लिखे heading up? Diversion of income versus V by S. V by S. Diversion of income versus application of income. Diversion of income versus application of income. लिखो बेटा नीचे. Diversion of income is a case where diversion of income is a case where income is diverted before it reaches the assessee. Income is diverted before it reaches the assessee, and it is not included in the income of assessee. And it is not included in the income of what, sir? Assessee. It is not included in the income of assessee. Bracket में लिखो. This concept is known as diversion of income by overriding title. क्या बेटा क्या बोलते हैं उसको? Overriding title. सर नाम से समझ जाओ सर आप लोग. बाबा क्या लिखा है? Overriding title. So who's having the title on that? Is the shopkeeper having title on that money? Who's having title on that money? That particular benefit of cows or trust for whom he is collecting, they have a title. Shopkeeper does not have a title on that money. You're getting my point, everybody? Speak out, my dear friends. That's it. हो गया. Next line लिखो. Application of income, sir. Application of income is a case where amount is spent after it reaches the assessee. Application of income is a case where amount is spent after it reaches the assessee, and hence it is included in the total income of the whom, sir? Total income of the assessee. So getting clarity, everybody? So speak out. Exam में एक बार आया, sir. I mean, not necessarily this will come in the exam, but it just came in exam one time. But whole logic is that we should know what is the meaning of this word called diversion of income, application of income. दिमाग यही बोलता है डाइवर्स मतलब डाइवर्ट हो गया, अप्लाई मतलब अप्लाई कर दिए. बट फर्क क्या है बेसिकली? डाइवर्शन ऑफ इनकम इज अ केस वेयर इट इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेस द assessee. So getting clarity on this point, everybody? Now I'll ask you one question. There is one person, Mr. X, who is in financial crisis. Okay? Who is in financial crisis. I told X मैं काम करूंगा, जितना भी इनकम मैं कमाऊंगा ना, उसका 10%
I will give it to you. Uska 10%, I'll give it to you. Is it diversion of income or application of income? Sorry? When you say application of income, Shiva Teja, even though I'm spending 10% on him, I should still pay tax on 100%. You're getting my point, everybody? Speak out. But I put one box and collect money from all of you telling isko donate karo, donate karo, donate karo, donate karo, mere liye nahi hai, uske liye. Then what do you call it? Diversion of income. फर्क समझ में आया ना सर? That money what is collected in that box will not form part of my total income. Clear, everybody? All of us? What is the golden rule of income tax? All revenue receipts are taxable unless specifically exempt. All capital receipts are exempt unless specifically. याद है दोस्तों ये सब? And revenue capital का difference क्या है? कैसा बोलेंगे हम? What is the difference between revenue receipt and capital receipt? बोलो. Wonderful. Revenue receipt is those which is earned from a source. Capital receipt is those which is earned from sterilization of a profit earning source. Correct na sir? Almost most of them the brain was telling revenue matlab recurring, capital matlab asset भेजे तो आया. ये general answer पता है, but that language is not what I want. I clearly told you. बोलो वापस. Revenue receipt is what? Revenue receipt is what we get from a source. Capital receipt is what we get from sterilization of what? Profit earning source. बेटा कल लिखे ना हम लोग ये बात? कल ही लिखे शायद हम लोग, कल या परसों? हाँ कल ही लिखे थे हम लोग. अरे यार कल ही तो लिखे यार, ऐसे कैसे भूल जाएंगे आप? राहुल, कॉन्सेप्ट तो सुना होगा ना? हाँ वेरी गुड. कम ऑन, व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? Revenue receipt is an income earned from a source. Capital receipt is a income earned from sterilization of a profit earning source. कल एक केस का स्टोरी बताया था आपको, याद है? एक बंदा मशीन टाइम पे आया नहीं तो उसका ऑर्डर गया, याद है ना? इनफैक्ट वो केस लॉ का नाम है सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड. आपको जरूरत नहीं है वो सब बोल के मैं लिखा है नहीं बिल्कुल, बिकॉज दैट यू लर्न इन सीए फाइनल. But there's a case law called Saurashtra Cements Limited. In that case, all the story happened. Understood? Everybody? चलो बेटा, ये देखो अभी. Section 224. Which section, sir? Defines what is an income. And we all know that under Income Tax Act, we classify income into how many heads of income? What are 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, income from other sources. When I combine all 5 heads of income, what do I call it? When we combine all 5 heads of income, what do we call it? Gross total income. From that we take what? Deductions under chapter 6A. Then what do we get? Total income. We calculate tax only on that total income. And the total income is rounded off to a nearest multiple of 10 rupees. Section 288. A. B is for? A is for? Very good. याद है ना बेटा? Please, clear no? Good, chalo. Now see, what are the principles clarifying the concept of income? कुछ लिखेंगे नहीं, बस देखो ध्यान से बस. It should be what, sir? Regular, and it should be from definite source. Second, there are different forms of income. बोलो क्या है heads of income अपना? Salary, heads for house property, PGBP, capital gains, other sources. If an income is taxable, it's an income, but it's not covered under the first 4 heads. Where do we show? Other sources. उसका नाम ही है income from other sources. Receipt versus accrual. Very, very important. अब बोलो बेटा, receipt में accrual में फर्क क्या है? सुने ये word mercantile system of accounting? Heard this word mercantile system of accounting? और mercantile word सुने या नहीं सुने यार? हो गया ना फाउंडेशन? अक्रूवल का वर्ड सुने नहीं क्या? क्या है अक्रूवल का मतलब क्या है? सर सर अच्छा, ओके. नेक्स्ट. सॉरी, आउटस्टैंडिंग.
कुछ पे करना बाकी है बट बिल तो आ ही गया, तो हम पीएनएल में खर्चा बुक कर देते और जितना पे उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी दिखा देते, बराबर ना? आप यही बोलना चाह रहे हैं ना? Accrual is a case where if an amount is payable, we'll record it. Amount is receivable, we'll record it. Receipt means what? Actual receipt. That is technically called a cash system of accounting. So for the purpose of doing accounting, people can follow two methods of accounting. Number one, cash system of accounting. Number two, mercantile system of accounting. Mercantile is also called as accrual system. बेटा सुने होंगे ना आप लोग फाउंडेशन में ये बात. Come on, what are two systems of accounting? What are the two systems of accounting? Cash system of accounting, mercantile system of accounting. You might ask now, sir, income tax says which one is better? Income tax says you can follow either that or you can follow either this. Choice is yours. You can follow cash system or you can follow accrual system or mercantile system. Getting my point, everybody? Good. Next line देखो अभी. I don't think I need to teach this. क्या है वो? Taxable है क्या? Example? Doctor, you are selling drugs. इनकम टैक्स बोला पहले टैक्स भर उसके बाद अंदर जा. याद है ना सर वो केस? हाँ, नेक्स्ट लाइन देखो. इनकम शुड बी व्हाट सर? रियल एंड नॉट फिक्शनल. ऑब्वियसली यार, कॉमन सेंस पॉइंट. वो तो एक्चुअल इनकम होना चाहिए. हाउ कैन इट बी फिक्शनल इनकम? नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड टाइटल. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉपर्टी. ओके, फादर डाइड. टू सन्स आर फाइटिंग. ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. बोथ ऑफ देम डिड नॉट डिसाइड सो फार हुज प्रॉपर्टी इट इज. इनकम टैक्स इज टेलिंग दोनों बाद में लड़ लो, बट दोनों मिलके मुझे तो पहले टैक्स पे करो. यू गेटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? Disputed title means whether title is in dispute or title is clear. Income tax says it doesn't matter to me boss, you have to pay me tax. You fight internally among yourself, but tax तो मुझे पे करो. So getting my point? वरना दोनों को हम liable बनाएंगे. No doubt about it. Next line. Relief or reimbursement of what, sir? Expenses is not treated as what? So getting my point, everybody? Relief or what, sir? Reimbursement of what? Expenses is not treated as income. Let me give a small example. सर आपने एक दिन मेरे पास आके बोला सर सीए इंस्टीट्यूट का फीस पे करना है सर, मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, आप प्लीज आपका कार्ड यूज करके पे करेंगे क्या, मैं आपको कैश दूंगा. सो आई पेड यूजिंग माई डेबिट कार्ड एंड मेड द पेमेंट ऑन योर बिहाफ एंड यू रीइंबर्स टू मी बाय कैश. इज इट इनकम फॉर मी? स्पीक आउट. वही मीनिंग है वहां पे. रिलीफ और रीइंबर्समेंट ऑफ expense is not treated as what? Exactly. This point is already over. What is that? Diversion of income by overriding title versus application of income. Important concept. दोस्तों clear है ना? Yes. Next line you see. Surplus from what activity? Mutual activity. Let me give a small example for this. Surplus from mutual activity. Sir, heard of something called club? What is a club? What is a club? स्टूडेंट बोल रहा है सर आप पूछे सुने क्या? हम बोले सुने, फिर अगला क्वेश्चन कैसा पूछते हैं आप? बोलो. Golf club. Okay. Sir, club is basically a kind of association formed by the members for the benefit of their own self. Correct or not? So speak out. For example, we all together formed one club, Prestige Point CA Students Club. Just an example. Okay? We formed a club like that. When we formed a club like that, each one of us contributed 1,000 rupees, 1,000 rupees, 1,000 rupees, 1,000 rupees. Total fund has come to about 10 lakh rupees. Using that 10 lakhs, we are conducting some activity for the benefit of our own self. हमें एंजॉय करें ना पैसे को. अरे बोलो यार, बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट है क्या? बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट है क्या? स्पीक आउट. दैट्स व्हाई दे से सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट taxable. Is not what, sir? Obviously for a simple reason, because it is a surplus from mutual activity. It is not a profit. It is only a surplus. We are not making any profit out of it. Friends, getting clarity on this point, everybody? So a club is a kind of an association which is formed by the members
for the benefit of members. So whatever money is left out in that club is not a profit for that club. It is only a surplus which is left out. Friends, getting my point, everybody? So surplus from what activity? Mutual activity is what? Not taxable. So getting clarity on this point, everybody? Yes. Surplus from what activity? Mutual activity. Example for mutual activity is a club or any kind of association. Or an example dunga, sir. In apartment society, I mean, in Pune it is very popular that most of people stay in apartments than independent houses, bungalow and all. Let's take example of an apartment. Each member is paying some maintenance charges to association. अरे बोलो यार, association के पास कुछ पैसा है, association has spent that money for some activity, balance कुछ बच गया ना association के पास, association का profit है क्या वो? क्या है वो association का? Surplus, is it taxable? Speak out. That's what I told. Surplus from mutual activity is not taxable. Getting clarity, everyone? Next line you see. Lump sum receipt, whether it is coming in lump sum or it is coming in periodically or it is coming in part, still it is an income. It's not necessary that income should come on monthly basis only. Even if it comes lump sum, it is still an income. Next line. Personal gifts. याद है ना ये? Gift is definitely taxable. But gift from relative is exempt. But other than relative gift is taxable if the gift is more than 50,000 per annum. Which case taxable, how taxable and all, we'll talk in detail when I go to the chapter called income from other sources. Are we clear with that, everybody? Yes? So gift taxable है क्या? बोलो बेटा. Tax-free income. So tax-free income doesn't mean that we will not pay tax. Tax-free income is that income on which already TDS is done. On which already what is done? Example याद है ना, शिवा तेजा को 1 लाख रुपए आए तो वो लोग 10% कट करके बाकी they'll pay me only 90,000. And कौन बनेगा करोड़पति? 1 crore check, camera off, 70 lakhs check. याद है ना बेटा ये चीज? Same income cannot be taxed what? Simple सी फंडा है यार. 2 बार टैक्स क्यों पे करेंगे यार? Dharmada is what? Not taxable. Dharmada is something like charity. A charitable trust will not pay tax if they are doing charitable activities. Are we clear? Surplus from what? Devaluation of currency. This is also definitely an income. What is the surplus from devaluation of currency? Listen, Shiva Teja gave a service to one US person. To whom did I give service? US person. And the bill I raised is $1,000. When I raised the bill for $1,000, the dollar price was 76 per dollar. 76 per dollar. So I had to get how much? 76,000. Yes or no? Speak out. After some point of time, 76 per dollar became 80 rupees per dollar. Now how much will I get? 80,000. Is it my income? Speak out. That is called devaluation of currency. That is also my income. Friends, clear with this point? Taxable है? Definitely taxable है. Next, income includes what? Loss. अब loss को क्या करेंगे हम? Set off करेंगे income के साथ. Sir, I told this point to you. If I get a loss and if I have some other income, that loss I'll set off with this income. Correct or not? Finally, last one. Pin money is not an income. Now, what is this word called? Pin money. Pin money is something like pocket money. Exam में एक बार आया था 2 मार्क के लिए. What is pin money? Student wrote, pin money means money earned by selling safety pins. जो मन में कुछ भी लिखेंगे यार, कुछ भी बिना कोई लॉजिक का यार. What is pin money? Pocket money. Is it an income? अरे बोलो यार. If I give some 10,000 rupees to my wife as pocket money to her, is it income for her? Speak out. Chalo. Finally, this concept is important. Please carefully listen. Income includes any assistance in the form of a, what's sir? Subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called. आपको जो नाम लगाना है नाम लगाओ. पर किसने दिया ये? From central government or state government or any authority or body or agency in cash or
kind. For example, government is giving me some subsidy, government is giving me some grant, government is giving me some incentive. That is my income. Press yes or no, my dear friends. For example, if I say that I will start up a new industry in Maharashtra in a backward area, government says, wow, you're starting in a backward area? Fantastic. We'll give you 10 lakhs. Do it. Subsidy. Government dete na, sir. That subsidy becomes an income. You're getting my point, everybody? Finally, however, subsidy or grant or reimbursement which has been taken into account for a determination of actual cost. What is this point? I'll tell you. Listen carefully, please. For example, sir, this point I'm talking, listen carefully. For example, Shiva Teja is buying one machine. I started doing manufacturing in a backward area. When I'm doing manufacturing in backward area, government is extremely happy with me and they want to support me because I'm doing manufacturing in what area? Backward area. Clear, my dear friends? And for the purpose of manufacture in backward area, I want to buy one machine. And the cost of machine is, let's say, 20 lakh rupees. What is the cost of machine? Government is telling, Shiva beta ek kaam kar, tu tension mat le, 15 lakh tu usko pay kar. Baki 5 lakh, hum log usko pay karenge on your behalf. We will pay 5 lakhs to the seller on your behalf. You're getting my point? Technically, how much I paid for the cost of asset? Without. Income tax says, when you record the asset in your balance sheet, when you record the asset in your balance sheet, record the asset at a value of 15 lakhs. Don't record the asset as a value of 20 lakhs. That means we'll charge depreciation also only on 15 lakhs. Getting clarity, everybody? And once we are reducing that 5 lakhs from the cost of asset, we will not say again that 5 lakhs is income. अगर आप दोनों करेंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा ना? So getting my point? I repeat once again, please listen. Shiva Teja is doing manufacturing activity in backward area for which government is extremely happy. Okay? I'm buying machine from a person for 20 lakh rupees. And government told, beta ek kaam kar, tu 15 lakh pay kar, baki 5 lakhs we will pay on your behalf. So technically, what is the net amount I paid from my pocket? 15 lakhs. Law is telling, please record the cost of asset at what value? 15 lakhs only. So that means in the balance sheet, my asset is recorded at what value? 15 lakhs. And I'm going to claim depreciation also only on 15 lakhs. So depreciation pata hai na? We'll claim depreciation also only on 15 lakhs. Again, don't tell 5 lakhs is income and pay tax again. Already asset to cost is minus कर दिए ना sir. Already asset cost है जब minus कर दिए, फिर से tax pay करो बोल तो गलत बात हो जाएगा ना फिर. अभी पढ़ो line. Subsidy or what sir? Grant. Or what sir? Reimbursement, which has been taken into account for a determination of what? Actual cost of the depreciable asset in accordance with explanation 10 to 43.1 shall not be included in definition of what? Income. You already reduce it from cost of asset. Again, don't show it as what? Income. समझ में आ रहा दोस्तों everybody? So speak out all of us. See what is happening here. I am buying an asset. For what value? For what value? 20 lakhs. When I'm buying an asset for value of 20 lakh rupees, of which how much I paid from my pocket? 15 lakh. 5 lakhs who paid? Government. But technically asset cost to 20 lakh hai na? But what value I'm recording in my books of accounts? 15 lakhs. When I'm recording the asset in my books at 15 lakhs, Act is telling again don't show 5 lakhs as income. Already asset cost से minus कर दिए ना यार. जब asset cost से minus हो गया तो depreciation 15 लाख पे आएगा ना यार. अब फिर 5 लाख को वापस income दिखाओ बोल तो double tax हो जाएगा ना फिर. Already told you same income cannot be taxed twice. Getting my point, everybody? So speak out. Excellent. Now I have a question. What is depreciation? Why do we charge depreciation? Do we charge depreciation on land? क्यों? राहुल, हाँ? लाइफ फिक्स्ड नहीं है. एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार, लैंड पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं करते? स्टूडेंट रोट, on land we don't charge depreciation because land value generally appreciates but not depreciates. One of the most horrible nonsense
Ridiculous, dangerous answer it is. The logic is very simple. The primary reason why we chart depreciation is efflux of time. EFF Efflux of time means by passage of time, the utility will come down. What will come down, sir? Utility will come down. But in case of land, there is no question of wear and tear. By passage of time, utility will not come down. That is the reason why we don't charge depreciation on land. कभी ये मत बोलो कि लैंड अप्रिशिएट होता है, लैंड हमेशा रेट ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, यहाँ पे 1 करोड़ था आज तो 2 करोड़ है. That is not the point, no? So getting my points? Everybody clear with this, all of us? Yes? Finally, last point. See here. In general, the word income covers receipts in the form of what? Money or money worth, which arise with certain what? Regularity or expected regularity from a definite source. The source need not necessarily be tangible, as the return for human effort is also what? Income. For example, Shiva Teja is taking class. It's a return for human effort. That is also an income. Beta correct hai? Further, casual incomes arise without any regularity will also be taxed. Example already अपने को पता है क्या है? Betting, gambling, lottery, crossword puzzles. Crossword example? सुडोकू. So बताया था आपको ये चीज. सर क्लियर है? चलो बेटा लिखो बुक में भी. Put side heading section 224. कैसा बोलेंगे हम 224? Section 2? हाँ? Clause 24. Clause का सबसेक्शन का फर्क पता है ना? Right. Section 224, title income. Title what, sir? Income. लिखो नीचे. Income includes all types of receipts. Income includes all types of receipts earned by an assessee. Income includes all types of receipts earned by an assessee, which could be regular, or casual incomes. Which could be regular or what income, sir? Casual income. Next point. Any subsidy or grant received by an assessee, from the government, any subsidy or grant received by an assessee from the government shall also be regarded as income. Shall also be regarded as income. Full stop. However, comma, continue please. However, comma, if such grant or subsidy is reduced from
from actual cost of asset if such grant or subsidy is reduced from actual cost of asset, then such subsidy or grant then such subsidy or grant then such subsidy or grant shall not be regarded as income. You got meaning of this point, no? Generally, subsidy grant we get from the government is income. But if we reduce that from actual cost of asset, then we don't call it as income separately again. You got the meaning of this point, everybody? Yes? Next point. Illegal income. Illegal income is also taxable. Clear? Next point. Surplus from mutual activity. Surplus from mutual activity is not regarded as income. Surplus from mutual activity is not regarded as income. Example, associations or clubs. Correct, no? Next point. Pin money. Pin money. Bracket pocket money. Correct, no? Pin money, bracket pocket money is not regarded as income. Is not regarded as income. That's it. So are we clear with this, everybody? Beta clear hai yahan tak? So what is section 27, 29, 224? Income. 225A. What is India? India is India. India covers territory, territorial waters, continental shelf or exclusive economic zone. Seabed, subsoil underlying such water. Airspace about territory and territorial waters. Airspace about territory and exactly. Airspace above exclusive economic zone is not covered. Logic also I told you why. So clear now everybody? All of us? Pakka? 231. 234. Section 3. 172. Shipping business of non-resident. Law is telling please pay tax and walk out. And what is the percentage? 7.5%. वो टैक्स नहीं है बेटा. 7.5% इनकम है. जितना तेरा टर्नओवर है उसका 7.5% इनकम मानेंगे. क्लियर है ना सर? 7.5% टैक्स नहीं है बेटा, इनकम है वो. ये हो गया डाइवर्शन एप्लीकेशन ऑफ इनकम. रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट भी हो गया. यस. सबसेक्शन और sir, I already told you, no? See, for example, if 23.1, 23.2 is there, 23.1, 23.2 both are interrelated to each other, then we call it as subsection. But if 2.1, 2.2 there is no relation, we call it as what? Clause. Subsections are interlinked with each other, but in clause there is no relation between one clause to another clause. Class के example definitions. बताया था हमें.
हाँ ठीक है, आपको समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात में। 224 इनकम है, 231 पर्सन है, पर्सन का इनकम का कुछ लिंक है क्या, इसलिए उसको क्लॉज बोलते हैं, समझ गया। बट इफ 225 ए इज इंडिया, 226 is talking about what is covered within India, 227 is talking about what is not covered in India, फिर लिंक है उसके साथ, then what do you call it? Subsection. एग्जाम्पल बहुत जल्दी हम लोग चालू करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेयर आई टेल यू 23(1) is dealing about let out property, 23(2) is about self occupied property. उतना क्यों, बहुत जल्दी आज या कल, if time permits today or tomorrow, we are going to start residential status. In that we will learn section 6(1) basic conditions for becoming resident, section 6(6) additional conditions. दोनों का कुछ लिंक है, तो क्या बोलेंगे हम, सिंपल, क्लियर है, डन। नेक्स्ट, ये हो गया, ये देखो मस्त पैक करके जा रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, चले जा, बट टैक्स पे करके जा। चलिए देखो ना, ऑलरेडी ये पता है अपने को, बट सेक्शन नंबर देख लो। सेक्शन 14 डिफाइंस व्हाट इज 5 हिट्स ऑफ इनकम, कंबाइन करो, आएगा अपने को ग्रॉस टोटल इनकम। देखो ये बात, डिटरमाइन व्हाट सर, क्लासिफाई इनकम अंडर 5 heads of income, compute income under each head of income, do clubbing, do set off, then what do we get, computation of what, gross total income, then we take what, deductions, they are given by chapter 6 is what, total income, computation of tax liability. It's a clear process, everybody, पक्का। क्लबिंग का एक एग्जाम्पल, क्लब का नहीं, क्लबिंग, क्लबिंग, हाँ मेरा छोटू, एग्जैक्टली, हाँ, माइनर इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ व्हाट, पेरेंट हुएवर इनकम इज हायर, याद है ना यार, अब पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ेंगे जब वहां पे जाएंगे तब डिटेल में पढ़ते। नेक्स्ट, अरे हाँ, कल मैं आपको ये भी बताया था एग्जामिनेशन का डिडक्शन का फर्क, याद है क्या बेटा, फर्क क्या एग्जामिनेशन डिडक्शन का, exempted incomes are those which will not form part of your total income, दोस्तों याद है, exempted incomes are those which will not form part of your total income, but deductions are those what we reduce from gross total income, and there are two types of deductions, based on payments, based on incomes. If it's based on income, first we will take it as income, then we will take deduction. Classic example section 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन, पहले इनकम दिखाएंगे उसको, कितना आएगा डिडक्शन, इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर, अच्छा क्लियर है। नेक्स्ट, या देयर इज नथिंग कॉल्ड मैक्सिमम इंटरेस्ट व्हाट बैंक विल गिव, जितना बैलेंस रहेगा सेविंग्स अकाउंट में उसके हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। इफ यू हैव 1 crore बैलेंस इन सेविंग्स अकाउंट, उसके हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। Why would बैंक रेस्ट्रिक्ट किया, हम इतना ही देंगे, आपके पास आपके पैसे बैंक में, मतलब बैंक वाला बहुत खुश है, वो यूज कर रहा है आपका पैसा, करेक्ट है ना यार, सिंपल। चलो नेक्स्ट, सर आपको कुछ दिखाना था मुझे आज, अरे हाँ किधर गया वो, यस, सी दिस कॉन्सेप्ट, बोलो मुझे अभी, व्हाट आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल, नॉर्मल, सीनियर, सुपर सीनियर। नॉर्मल का एज लिमिट क्या है, 0 to 59, सीनियर 60 to 79, सुपर सीनियर 80 एंड अबव, पता है अपने को ये चीज, बेटा बोलो, अभी देखो ये, ए पर्सन इज बॉर्न ऑन 1 April, कब पैदा हुआ ये, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, किसका बर्थडे है यहाँ पे 1 April, किसका भी नहीं है, ठीक है, देखो फिर 1 April क्यों नहीं हो सकता है, 1 April क्यों होगा, मतलब हाँ नहीं है तो ठीक है, मतलब क्यों होगा, क्या मतलब क्या होता है, हो सकता है ना, सी नाउ, a person born on 1 April would be considered to have attained a particular age on which day, 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday,
उसका मीनिंग क्या है हम समझेंगे, टेंशन मत लो। देखो अब देखो, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट की क्यों बात कर रहे हैं हम? अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसको वो 3 लाख 5 लाख का कहानी आता ही नहीं है। और ये कल याद है ना पिंग पोंग, इफ इज ए नॉन रेसिडेंट वॉट एवर इज योर एज, नॉर्मल कैटेगरी, करेक्ट है ना यार? अभी रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट को नहीं पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। देखो अभी, रेसिडेंट इंडिविजुअल हु 60th बर्थडे फॉल्स ऑन विच डे, फर्स्ट अप्रैल को ही पैदा हुआ भाई, would be treated as having attained the age of 60 years in previous year 22 23। 60 years कब आए उसको? 1st April 2023, but will treat as if he got on 31st March। फर्स्ट लाइन पढ़ो यार, a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on which day? 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday। इसका बर्थडे कब है? 1st April 23, तो हम क्या ट्रीट करेंगे? एज इफ ही अटेंड 60 ईयर्स ऑन 31st March 23, मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर 22 23। समझ में आ रहा है सर? अरे बोलो यार, अब ये मत बोलो सर हमारा बहुत टाइम है सर अभी 60 का, अभी कॉन्सेप्ट तो समझो यार। And would be eligible for higher base contribution limit of what sir? 3 lakhs in computing tax liability for 23-24। Likewise, a resident individual whose 80th birthday, कौन सा बर्थडे बेटा? falls on 1st April 23 would be treated as having attained the age of 80 years in 22-23 and would be eligible for higher limit of 5 lakhs in computing tax liability for assessment year 23-24। समझ में आ रहा सर? ये अगर 1st April बर्थडे है तो हम ये ट्रीट करेंगे 31st मार्च को ही हो गया, एंजॉय कर, 1 साल पहले ही एंजॉय कर, ठीक है ना यार? सर क्लियर है? एग्जाम में तो आए नहीं अभी तक, बट कभी कभी इफ ICAI becomes इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेजी अकाउंटेंट्स दे कैन आस्क एनीथिंग। क्लियर है ना सर? एवरीबॉडी? नहीं समझ में आया अभी तक? अरे मैडम सुनो, सी फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज देयर मिस्टर एक्स, इसका बर्थडे है 1st April, 1st April बर्थडे इसका। अब क्यों है मत पूछो, है, अभी क्या करें हम? हाँ, इसका 60th बर्थडे, 60th बर्थडे आया 1st April 23 पे, 23, बट वी विल ट्रीट as if 60th birthday is done on 31st March 23। मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 22-23। असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 23-24। समझ में आया? 1st April 23 है तो भी हम लोग प्रीवियस डे ही देखते हैं, तो उसको 1 साल पहले ही उसको हायर एक्सेप्शन लिमिट मिल रहा है। क्या डोटे बेटा बोलना, समझ में आया क्या? सर सिंपल सी बात है यार, 1st April 23 को उसका बर्थडे हो रहा है, 1st April 23 को 60th बर्थडे आ रहा है, तो टेक्निकली 23-24 प्रीवियस ईयर को उसको 60 आ रहा है ना, बट एक्ट क्या बोल रहा है? उससे एक दिन पहले देख ले तू, एक दिन पहले क्या होगा? 31st March 23, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया उसका? 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, वो साल से आपको 3 लाख एक्सेप्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? एवरीबॉडी एक दिन पहले देख लेते हैं हम लोग, ये सब हमारे जैसे लोगों को अप्लाई नहीं होता। मतलब मेरा बर्थडे नवंबर में, किसी का अक्टूबर होगा, किसी का जैन होगा, फेब होगा, मार्च होगा, सब लोग, हम सब नॉर्मल लोग हैं। ये स्पेशल बंदा है जिसका बर्थडे 1st April को आया। यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई बोल रहा है सर हम भी अप्रैल में, अरे हम भी अप्रैल में, अप्रैल 10th 15th अलग बात हो गया। अब अप्रैल 10th है, अप्रैल 10th तो है 9th तो क्या फर्क पड़ेगा सर? फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 10th April, अगर एक दिन पहले देखेंगे आप फिर भी क्या होगा? 9th April, ये 23 है, ये भी 23 है ना, ईयर तो चेंज हुआ नहीं ना सर? ईयर चेंज हुआ क्या? अरे यार सर एक एग्जाम्पल दो, सुनो। माई बर्थडे इज 3rd November, ओके सर, assume I attained the age of 60 years, okay, on 3rd November 2050,
एग्जाम्पल, अब आप कैलकुलेट मत करो मेरे एज का, एग्जाम्पल दिया मैंने. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. नाउ व्हाट लॉ इज टेलिंग, वी विल ट्रीट एज इफ यू गॉट योर 60 years on which date? 2nd November 2050. तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2050 2051. असेसमेंट ईयर 51. मस्त है यार, तो बराबर है. अगर मैं ये डेट भी देखूं तब भी होगा 50 51 51 52. अरे बोलो यार, whether I see 3rd November or I see 2nd November, still my answer is same. Still my answer is same. एक ही बंदा है जिसको क्या फर्क पड़ेगा, किसको फर्क पड़ेगा? जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है. अगर एक दिन पहले जाएंगे तो हम क्या होगा? 31 मार्च. ईयर चेंज हो गया ना, तो उसको पहले ही 60 ईयर्स का बेनिफिट मिल रहा है ना यार. सर उसके लिए नुकसान नहीं है, बेनिफिट है. ये बेनिफिट है. 2.5 लाख का लिमिट 3 लाख हो गया. 2500 फर्क पड़ेगा ना यार. कैसा है 2500? 50,000 का 5%, 2500 बेनिफिट आएगा ना यार. अरे बोलो यार, अब समझ में आया मैडम? क्लियर है अभी? आपका बर्थडे 1 अप्रैल को है क्या? कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं है आपको फिर. सर क्लियर एवरीबॉडी? इसके पीछे लॉजिक क्या है बोलूं? ये लाइन देखो, फिर आपको आंसर आ जाएगा. एन इंडिविजुअल, मैन और वुमेन. क्यों लिखा है ये लाइन? फिर बताया था आपको, एक टाइम पे ऐसा था कि मैन को अलग, वुमेन को अलग, ज्यादा एग्जाम्शन. अभी हम लोग सब सेम है. रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ व्हाट? 60 years or more, but less than at any time during. When I say any time during previous year, what they are telling, if it is 1st April, please see what? 31st March. तो ईयर चेंज हो रहा ना ऑटोमेटिकली. बोलो बेटा. तो वो कॉन्सेप्ट जो मैं अभी जो डिस्कस करे वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ जिसका बर्थडे कब आ रहा है? 1st अप्रैल. नॉर्मल डेट कभी भी आता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो आप एक दिन पहले देखो, 2 दिन पहले देखो, 2 दिन बाद में देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सर क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का? कैन आई प्रोसीड? ये कॉन्सेप्ट पता है अपने को? क्या है वो? रिबेट ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल whose total income does not exceed 5 lakhs. कितना बेटा रिबेट? टैक्स पेएबल और 12,500, whichever is. Exactly. So are we clear? Everybody, sir? Good. Let's discuss some interesting questions now. Acha, before that, I will teach some concepts, then we'll discuss some questions. सुनो ध्यान से. सर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान से सुनो. एक बंदा मिस्टर ए है, ठीक है? दिस फेलोज इनकम इज एग्जैक्टली 50 लाख. कितना इनकम इसका? इसका टैक्स कैलकुलेट करो बेटा. 2.5 लाख nil. 2.5 lakh to 5 lakh. बराबर है? व्हाट इज द टैक्स? 13,12,500. अब मुझे बोलो सरचार्ज आएगा क्या? नहीं. क्यों? सरचार्ज विल कम ओनली व्हेन इट इज मोर देन. एग्जैक्टली. सर गेटिंग क्लैरिटी? अभी एक क्वेश्चन बोलूंगा सर, सुनो ध्यान से. अभी नेक्स्ट, डोंट राइट, जस्ट लिसन फर्स्ट. वन पर्सन मिस्टर बी, हिज इनकम इज 51 लाख. कितना बेटा इसका? इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो 2.5 lakhs nil. अबाउट 10 लाख 30%. कितना होगा वो? सॉरी 12 lakhs टोटल. बोलो बेटा. Will we also add surcharge?
बोलो क्या रेट है? बराबर है, टोटल बोलो। 14 lakhs। नहीं, अच्छे से देखेंगे बाद में। क्या ऑब्जर्व किया आप इसमें? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? हाँ सर। हाँ बराबर है सर। सर इनकम कितना है? इधर कितना है बेटा? कितना फर्क है इनकम में? स्पीक आउट। 1 lakh। व्हाट इज द डिफरेंस इन टैक्स? 1 lakh। So basically, if you observe, extra tax is more than extra income. करेक्ट है सर? स्पीक आउट सर। अब इमेजिन करो बी का हालत क्या रहेगा। वो बंदा तो रोएगा ही रोएगा। अरे भैया मैंने कमाया 1 लाख रुपए, आप मेरे से कितना पूछ रहे? 1 लाख 64,000। 64,250। I earned 1 lakh extra. You are asking me to pay 164,250. How logical is it? Sensible is that? This is ridiculous. समझ में आ रहा है सर? Speak out. Government is telling we will give you something called marginal relief. What do you call it, sir? Marginal relief. Marginal relief, they told marginal relief will be 64,250, which comes to 14 lakh 12,500. कुछ समझ में आया? क्या हुआ अभी? गवर्नमेंट पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन, भैया तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है बोल। मैं 1 लाख रुपए कमाया एक्स्ट्रा। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने की वजह से मेरा टैक्स एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया? 1,64,000 टैक्स बढ़ गया। बराबर सर? स्पीक आउट। आई एम क्राइंग बिकॉज माई एक्स्ट्रा इनकम इज 1 लाख बट एक्स्ट्रा टैक्स इज 1,64,000। yes or no my dear friends? 164,250 is my extra tax. The government is telling to रो मत, हम तेरे को एक बेनिफिट देंगे। क्या है बेनिफिट का नाम है मार्जिनल रिलीफ। दैट इज 64,250। वो माइनस कर बाकी पे कर। ये बी दिमाग चला रहा है, क्या हो क्या रहा है यार यहाँ पे? वो क्या बोल रहे हैं मार्जिनल रिलीफ? बी पूछ रहा है मतलब तू क्या करना क्या चाह रहा है? करना क्या चाह रहा है? तू एक्स्ट्रा कितना कमाया? एक्स्ट्रा कितना कमाया? 1 लाख। टैक्स एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 164,250। तू रो क्यों रहा है? बिकॉज योर एक्स्ट्रा टैक्स इज मोर देन योर एक्स्ट्रा इनकम। दोनों में फर्क कितना है? 64,250। उसको माइनस कर मार्जिनल रिलीफ, बाकी हमको पे कर दे। तो बी 2 मिनट सोचा है, अरे हो क्या रहा है? फिर बी ने पूछा, अच्छा तो मैं एक्स्ट्रा 1 लाख जो कमाया पूरा तू ले रहा क्या? पूरा तू ले रहा क्या? गवर्नमेंट रिप्लाई कर दिया, हाँ हाँ। ये गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? देन बी आस्क्ड गवर्नमेंट, तो मेरे को फायदा क्या हुआ इससे? फिर मार्जिनल रिलीफ से मेरा फायदा क्या हुआ? गवर्नमेंट रिप्लाइड, तेरा फायदा तो कुछ हुआ नहीं, पर एक चीज तू दिमाग में रख ले कि तेरा नुकसान नहीं हुआ। यू गेटिंग माय पॉइंट? You did not gain anything, but good thing is that you are not losing more. You're getting my point, everybody? Speak out. Now, before we write this, now I'll give one more example here. Imagine a case like this. 52 lakh. कितना बेटा? बोलो क्या होगा? Up to 2.5 lakhs? Nil. कितना बेटा? 12 lakh? 60. Total? कितना था सच?
1 lakh total 750 बराबर यार. बेटा बोलो, अब मुझे बोलो ये दोनों का इनकम में डिफरेंस कितना है, ये दोनों का टैक्स में फर्क कितना है. 197 नो मार्जिनल रिलीफ. समझ में आ रहा है सर एवरीबडी? बेटा बोलो प्लीज एवरीबडी, why 52 lakh no marginal relief? Because extra tax is not more than extra income. मार्जिनल रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं आपको? बिकॉज योर एक्स्ट्रा टैक्स इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम. यू आर क्राइंग सेइंग दैट अरे मैं कमाए 1 लाख तो तू 164 कैसा पूछ सकता है यार, ये नॉनसेंस है. गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, बेटा तू एक काम कर 1 लाख एक्स्ट्रा है ना, 1 लाख एक्स्ट्रा हमको पे कर दे, खत्म छोड़ क्लास. So getting my point everybody? So speak out. चलो put the heading in your book, marginal relief, very very important. सर ये सर 50 lakhs को बोल के नहीं, 50 lakh टू, और एक एग्जांपल दूंगा सर, लेट्स टेक दिस एग्जांपल आल्सो, फिर लिखते हैं बाद में, बट ये भी देख लो. 1 crore एग्जैक्टली 1 crore. चलो क्या होगा अप टू 2.5 lakhs nil. 2.5 to 5 lakh 5%, 12,000. 5 lakh to 10 lakh 20%. How much is that? 1 lakh. About 10 lakh 30%, which is 27 lakh. 28 lakh 12,500. बेटा बराबर है. और कुछ आएगा? कितना लगेगा? 10%. Yes or no? How much is that? Total? Other side 1 crore 1 lakh. अभी बोलो 2.5 lakh nil. कितना है? 27 lakhs. टोटल बोलो बेटा. फिफ्टीन परसेंट बराबर है ना बेटा? बोलो कितना है 15%? 4,26,370. राइट, बोलो 8. अब मुझे बोलो दोनों का डिफरेंस इन इनकम कितना है, दोनों का डिफरेंस इन टैक्स कितना है? 1 lakh will marginal relief come. कितना है marginal relief? 75,125. समझ में आ रहा है सर? तो लॉजिक आपको अभी तक समझ में आया होगा. दैट मार्जिनल रिलीफ स्टोरी विल कम इनटू पिक्चर व्हेन योर इनकम इज स्लाइटली, व्हाट इज दैट वर्ड, स्लाइटली अबव द लिमिट ऑफ सरचार्ज. जब इनकम थोड़ा सा बढ़कर है अपना सरचार्ज लिमिट से, तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ. अगर आप 1 crore 5 lakhs पे कैलकुलेट करो नहीं आता रिलीफ, देखो इनकम का फर्क 5 लाख है बट टैक्स का फर्क 5 लाख के नीचे रहता है. समझ में आ रहा है सर? दिस प्योर मैथमेटिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी. प्योर मैथ्स का गेम है और कुछ नहीं. आर वी क्लियर? चलो लैंग्वेज लिखते हैं अभी. पूछो पूछो पूछो, कोई बात नहीं. अच्छा आप फिगर आउट करो पहले फिर पूछो, कोई बात नहीं. चलो बेटा क्या लिखे आप? हेडिंग लिखो मार्जिनल रिलीफ.
ऑफ करना है. चलो हेडिंग लिखो, मार्जिनल रिलीफ. राइट डाउन. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, the concept of marginal relief the concept of marginal relief is because of surcharge. And sir, एक second, लिखो मत, एक second. So whenever we are talking about marginal relief, we are checking marginal relief, you should not add cess and compare. First surcharge के साथ ही compare करना है अपने को. Relief आए तो relief निकालना है, उसके बाद cess add करना पड़ेगा आपको. You getting my point, everybody? You should never add HEC and then compare. You have to just compare, calculate relief, then add HEC. एग्जाम्पल ये केस में 75 125 माइनस करो वहां पे, ये फिगर माइनस करेंगे यहाँ पे. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. उसके बाद हम सेस ऐड करेंगे. समझ में आ रहा है मेरी बात एवरीबॉडी? सेस ऐड करने के बाद कंपेयर नहीं करना है, पहले ही कंपेयर करना है. बिकॉज मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद HEC. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज ओनली टू डू विद सरचार्ज. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलो बेटा क्या लिखे हम? surcharge. Concept of marginal relief is because of surcharge, and it will apply when the income is and it will apply when the income is slightly beyond the limit of surcharge. When the income is slightly beyond the limit of surcharge. Next point. If extra tax is more than extra income, if extra tax is more than extra income, then marginal relief would apply. If extra tax is more than extra income, then marginal relief would apply. And marginal relief is equal to extra tax minus extra income. Marginal relief is equal to extra tax minus extra income. So बराबर है everybody? Yeah, write down note. HEC is irrelevant. बराबर है sir? HEC is irrelevant. HEC is irrelevant. HEC is irrelevant in the concept of HEC is irrelevant in the concept of marginal relief. HEC is irrelevant in the concept of marginal relief. बराबर है sir? Speak out. Continue. Full stop. First, marginal relief is reduced. First, marginal relief is reduced. First, marginal relief is reduced. And then, first marginal relief is reduced and then HEC is added.
First marginal relief is reduced and then HCC is added. That's it. So clear this point everybody? बेटा सबको clear है? चलो example लिख लो. Take the example. Come on, finish off writing this. Can we proceed? Yes? हो गया ये? Yes, friends, come on, please reply. Done? Take this example also.
योर एक्स्ट्रा टैक्स विल बी मोर देन एक्स्ट्रा इनकम, ओनली देन मार्जिनल रिलीफ विल कम. वो एग्जैक्ट आएगा नहीं कभी, या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा. एग्जैक्ट आने का पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता. मैं तो आज तक देखा नहीं वो नंबर्स, जनरली नहीं हो सकता है. बट इफ एग्जैक्ट ऑल्सो देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ. सी गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है. मार्जिनल रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज योर एक्स्ट्रा टैक्स इज मोर देन एक्स्ट्रा इनकम. अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे जेब से तो मार्जिनल रिलीफ क्यों दो आपको? सर क्लियर है एवरीबॉडी? चलो आई गिव अ क्वेश्चन, सॉल्व इट. राइट डाउन. compute tax payable, compute tax payable, compute tax payable of Mr. A, compute tax payable of Mr. A, aged 49, compute tax payable of Mr. A, age 49, assuming his business income is, assuming his business income is 5 crore 1 lakh. Assuming business income is 5 crore 1 lakh. चलो बेटा 2 minutes time, get me the answer. हाँ सब करके ही बोलना है आपको. चलो do it. 5 crore 1 lakh. फाइव करोड़ 1 लाख आप किससे कंपेयर करोगे? 1 करोड़ से कंपेयर करेंगे क्या? हाँ 5 करोड़ से कंपेयर करेंगे. एग्जैक्टली डू इट.
डन? क्या है आंसर? सॉरी, कंफ्यूज हो गया दोस्त आपका? क्या है आंसर आपका? 6 लाख। मैं इनकम क्या बोला? व्हाट इज इनकम आई गिव? 5 करोड़ 1 लाख बोला मैंने इनकम। क्या है आपका आंसर? 2 करोड़ 11,47,000। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है। टैक्स, हाँ लास्ट में मार्जिनल कट करके सेस ऐड करने के बाद, हाँ सब कुछ सेस ऐड करना ना यार। आपका है आंसर? क्या है आपका आंसर? है इसमें? कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला। दोस्त आपका क्या आंसर? 1 करोड़ 92 लाख 56,250 बराबर। ठीक है। आपको ये आंसर है क्या लास्ट वाला? ये बंदा खुश है, मेरे साथ कोई ना कोई तो है। ठीक है, बाकी लोग यही 4 आंसर है सबके पास। राहुल क्या है दोस्त? ऑलमोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये चारों में से तो कुछ भी नहीं आएगा तेरे को, दूसरा आंसर ही आएगा। दोस्त आपका है क्या इसमें? इसमें नहीं है, बोलो। हाँ 560 आपका है आंसर इसमें? है इसमें? हाँ ठीक है, चारों में है ना, पांचों में 4 नंबर वाला, ठीक है। तेरे साथ ही है, हम साथ साथ है। मैडम आपका आंसर है इसमें? इसमें है आपका आंसर? ठीक है। फोर्थ वन, क्या बात है, बहुत लोग फोर्थ वन बोल रहे हैं। ठीक है, चेक करें क्या? चलो, सबसे पहले किसका टैक्स निकालेंगे हम बेटा? 5 करोड़ वाला टैक्स निकालते एक जगह पे, अलग से लिखते 5 करोड़ 1 लाख, बराबर सर? चलो कैसे निकालेंगे 5 करोड़ वाला टैक्स? 2.5 लाख क्या हो गया? नील। 2.5 लाख to 5 lakh, what rate? 5%. How much is that? 12,500. 5 lakh to 10 lakh क्या रेट है? How much is that? About 10 lakh 30%. What is about 10 lakhs? 4 करोड़ 90 लाख का 30%, बराबर कितना रहा है? टोटल 1 करोड़ सच एट द रेट ऑफ 25%, बराबर है? गया? किए, लेकिन कुछ तो किए। हाँ, उन सबसे अलग ही आंसर है। क्या 3 करोड़ में बैठे क्या आप? 1 करोड़ 77 लाख। हो सकता है आपका ऐसा ही हो, क्या मालूम। हो सकता है, मैंने बोला नहीं, हो सकता है। चलो सरचार्ज कितना है बेटा? छोटे परसेंट कितना रहा है? 25%। 3,120। चलो टोटल कितना है बोलो? 1 करोड़। चलो अभी आएगा मजा, बोलो। अभी थोड़े लोग प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा आंसर सही हो।
कितना है? वन करोर 48 lakhs 42,500. 37% ओनली नो. कितना पे 37%? 720. चलो टोटल बोलो. 2 crores 3 lakhs. बोलो डिफरेंस कितना है बेटा इस दोनों का? 1 लाख. 1 लाख. ये दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 लाख है ना यहाँ पे. हाँ, टैक्स में फर्क कितना है? 17 lakhs 18 माने 18,000. It should be 1,95,015 यही आना चाहिए. 1 crore 95 lakhs 95 नहीं 86 lakhs 86 आएगा बराबर ना. अरे बाजू वाला फिगर को 1 लाख ऐड होगा उतना ही तो बात है बराबर ना यार. चलो इसको हम ऐड करके क्या करेंगे अभी लास्ट में? कितना है? 7 lakhs टोटल. क्या बात है. किसको आया आंसर? सुपर. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लास. वेरी नाइस. गुड. समझ में आया ना सर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया बहुत बार. और एक बंदा एग्जाम में 5 करोड़ 1 लाख को 1 करोड़ से कंपेयर कर रहा है. क्या दिमाग खराब होगा? किससे कंपेयर करेंगे 5 करोड़ 1 लाख को? 5 करोड़ से कंपेयर करेंगे ना यार. इफ यू कंपेयर 5 करोड़ 1 लाख विद 1 करोड़, हाउ डज इट मेक अ सेंस? वाई यू आर डूइंग दिस मार्जिनल रिलीफ? 25% की जगह आपको कितना परसेंट लग रहा है? 37% लग रहा है. सिंस दैट रेट इज गोइंग हाई, वी आर गेटिंग दिस मार्जिनल रिलीफ. अभी क्लियर? कर सकते हैं एग्जाम में? पक्का? श्योर? डन. देते ना, देते ना यार. अरे आप लॉजिक समझ गए ना यार. 1 लाख ज्यादा कमाए तो 18 लाख थोड़ी पूछेंगे मेरे से ज्यादा. गवर्नमेंट क्या बोले कितना एक्स्ट्रा कमाया तू? 1 लाख हमको दे दे. हो गया ना बात? Because the logic of the government is your extra tax cannot be more than your extra income. That is why you will get marginal relief. What is marginal relief? Extra tax minus extra income. चल क्लियर है सबको? Everybody. चलो take a short break and come back. After break we'll discuss more. Thank you.
Chalo, done. I hope we got a good clarity on this concept of marginal relief, everybody. So the story of marginal relief will come into picture only when extra tax is more than extra income. If not, there is no question of marginal relief. If extra tax is less than extra income, then there is no concept of marginal relief. I hope we got a clarity on this point, everybody. All of us. So guys, come on, bolo beta. What is section 27? 29? 172. Shipping business of non-resident. 174. Person living in India permanently or for long time. 174A. AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. Correct, my dear friends? 174B. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. What is 87A? 288A. Not gross total income. 288A is rounding off of total income. 288B is rounding off of tax payable. 224. Income. अभी पढ़े हम लोग. So clear, everybody? All of us? Good. Chalo. I'll teach some special points to you today, and the special rates of tax also we'll discuss in that. Are we ready, everybody? Chalo. Let's start, my dear friends. Come on. So far we have discussed a lot of interesting tax rates, and whatever tax rates we discussed are all the normal tax rates applicable to an individual. Where we discussed that we have got three categories: normal, senior, super senior. And along with that we also discussed special cases like casual income tax rate 30%, 115BB, and for unexplained income investments and all tax rate is 60% plus surcharge 25% plus cess 4%. Effective rate is 78%. दोस्तों correct है? Everybody, all of us? Now listen to an interesting concept here. Carefully please listen. So what are the 5 heads of income we have? Other sources. Correct, my dear friends? Now, the 4th head of income what we have is what, sir? Capital gains. Now, what is a capital gain? Come on, guys. What is a capital gain? Capital gains is a gain what we get from sale of a capital asset. Clear? That is the basic thing. Capital gain is a gain what we get from sale of a capital asset. Now, why I am specifically wrote the heading called capital gain is because if a person gets business income, whatever tax rates we discussed, that only will apply. If a person has got salary income, whatever tax rate we discussed, that only will apply. If a person gets income from other sources, whatever tax rates we discussed, that only will apply. And if a person gets casual incomes, 30% will apply. If a person has got unexplained income, 60% will apply. ये सब पता है आपने को? Now there is some special tax rates in case of capital gains. And we divide this capital gain into 2 categories. Long term, short term. The first question which comes is, when do we call it as long term? When do we call it as short term? In some cases, if you hold for more than 12 months, if you hold the asset for more than 12 months, we call it as long term. In some cases, if you hold the asset for more than 24 months, we call it as long term. In some cases, if you hold for more than 36 months, we call it as long term. You're getting my point? Let me give a small example. In case of listed shares, listed, I purchase shares of Reliance Industries Limited. And if I hold that shares for more than 12 months, we call it as long term. If I sell it in less than 12 months, we call it as short term. And let me tell you, my dear friends, the rate of tax for long term, the rate of tax for short term, both are different. Rate of tax for long term, rate of tax for short term, both are what, my dear friends? Different. Getting clarity? Now we will talk in detail in capital gains chapter, which case 12 months, which case 24 months, which case 36 months. We will talk in detail when we go to capital gains chapter. But now what we are trying to understand is rate of what? Rate of tax in case of long term and short term. Clear, friends?
Listen now. Long term general rate is 20% under section 112. What is the general rate for long term capital gain? 20%. Under which section, sir? 112. As per section 112, if you have a long term capital gain, you have to pay tax at what rate, sir? 20%. For example, I purchased one house 10 years back and now I am selling it. I got a capital gain of, let's say, 30 lakh. On the 30 lakhs, we'll apply straight away tax rate of what percent? 20%. We will not apply the concept of slab rates. We will not apply the concept of what? Slab rates. We know what is slab rate, right? Everybody? That slab rate concept we will not apply for capital gains. Clear, everyone? So what is the general rate? 20%. Which section? 112. But now listen. If there is a long-term capital gain on sale of equity shares or units of EOMF, equity oriented mutual fund, or units of business trust, we'll discuss in detail, don't worry, through recognized stock exchange on which STT is paid. On which what is paid, sir? STT is paid. चलो बेटा, अब पढ़ेंगे वापस एक बार. क्या लिखा हमने, सर? Sir, we are trying to discuss basically the special tax rates for special kinds of income. Normal tax rate already we know. What is normal tax rate? Normal category, senior category, super senior category. All that we know, my dear friends. Everybody? We are talking about what, my dear friends? Special tax rates in special cases. Already 2 special cases are over. What are 2 special cases already we have done? 115BB, 115BBE. Beta, bolo beta. 2 special cases already we have done. What are 2 special cases done? 115BB, 115BBE. What is 115BB? Casual incomes. BBE? Unexplained income, unexplained investments and all. Correct, beta? Dosto bolo. Now we are talking about special tax rates for capital gains. And capital gains is divided into 2 categories. Long term, short term. Long term and short term. In some cases more than 12 months. Some cases more than 24 months. Some cases more than 36 months. Which case, what story and all, we'll talk in detail when I go to capital gains chapter. But now we are focusing only on what rate? Tax rates. Clear? So for long-term capital gain, what is the general tax rate? 20%. So getting clarity, everybody? But other side we'll see now. Word by word we'll interpret. Word by word we will see. Long-term capital gain on sale of what? Do we know what is equity shares? Equity में preference में क्या फर्क है बेटा? Equity share and preference share में फर्क क्या है? Who are the owners? Huh? Preference shareholders are the owners. They only have preference while getting the dividend. And on liquidation, they have more preference compared to equity. That's it. But they are not the owners. Owners are only the equity shareholders. Correct, my dear friends? Right. Long-term capital gains on sale of equity shares or units of, what I wrote there, EOMF stands for Equity Oriented Mutual Fund. First of all, let me ask you, what is a mutual fund? अब बच्चा बोलेगा, subject to market risk. Read all documents carefully before investing. सुनिए ये वर्ड म्यूचुअल फंड होता क्या बेटा? म्यूचुअल फंड मतलब क्या है बेसिकली? कभी सुने ये वर्ड म्यूचुअल फंड? क्या मतलब है उसका? बोलो यार. या good, fair enough. So basically, when we invest money in a company, what we get is a shares. Correct, my dear friends? But in mutual fund, they don't give share, they give units, because mutual fund is something like a
collective investment scheme. Collective investment scheme. सर लॉजिक सिंपल है सर, आप सबके पास पैसे, but all of you guys have money with you, but you don't have that skill and talent where to invest so that profits will come. Clear, my dear friends? Shiva Teja will create one fund called mutual fund. I will take money from all of you and I'll give you units. I will not give you share because with your money I'm not doing business to give you share. With your money am I doing business? So I cannot give you share. What will I give you? Unit. Your money which I will invest with my skill set in proper companies. If in that company is profit come, I'll give you profit. If loss come, I'll give you loss. That is why we say it is subject to market risk. समझ में आ रहा है सर? Everybody, all of us, mutual fund is something like a collective investment scheme. That is the reason why in mutual fund they don't give share, they only give units. Now the interesting point to be noted is what is the meaning of this word called equity oriented mutual fund. Equity oriented mutual fund is that mutual fund which invests more than 65% in equity shares of domestic company. And there can be two types here. What are the two types? Listen, more for knowledge, listen carefully sir. If whatever money I pooled, more than 65% of the money I pooled, I'm investing in what? Equity shares of domestic company. Then my fund is called equity oriented mutual fund. Getting my points? That is possibility number one. Possibility number two, I'm investing money in another fund. In another fund. That another fund is investing at least 90% in equity shares. Then also my fund is called equity oriented mutual fund. That means directly I'm investing in shares, or I'm investing in another fund. That another fund is investing in equity shares. Then we call that fund as what? Equity oriented mutual fund. So getting clarity? Speak out. When we go to capital gains chapter, we'll learn more detail we'll learn. What difference it makes if it is equity oriented fund. If it is not equity oriented fund, what do you call it? We'll call it as debt oriented mutual fund. So getting clarity? We're talking about what here? Long-term capital gain on sale of what? On sale of what? Equity shares or units of what? Equity oriented mutual fund or units of what? Business trust. Business trust is also like a mutual fund only. Practically there is a concept known as real estate investment trust, business trust and all. See, for example sir, simple si baat hai. Take a small case like this. There is something called REIT, real estate investment trust. What does that mean? Listen, Shiva Teja has got 1 crore rupees with me. I want to buy one property, but the property value is 100 crores. I can't buy the property with 1 crore. Speak out. There is one trust called real estate investment trust, which pulls money from public. Which pull money from public. And the money what they pull from public, they invest in that real estate asset. Whatever rent will come, they'll share with all the unit holders. You getting my point? सर मैं अकेला वो नहीं ले सकता, तो सब साथ में मिलके ले रहे हैं उसको, इसलिए उसको बोलते हैं हम ट्रस्ट. You're getting my point? Everybody? All of us? चलो क्या नाम लिखे आप लोग? Long term capital gain on sale of what? Equity shares or units of what? Equity oriented mutual fund or units of what? Business trust through what is RSC? Recognized stock exchange. What is recognized stock exchange? BSC, NSC. What is BSC? NSC? Are the stock exchange regulated in India? Who controls that? What is SEBI full form? Exactly. SEBI controls the entire activities of stock exchange. So long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STD is paid. Lot old. Please, STT matlab Securities Transaction Tax. What do you call it? Whenever you are buying and selling shares on stock exchange, you are required to pay that STT. Practically pay करने का कोई concept ही नहीं है. I'll tell you why. Because जब हम sales share करेंगे ना sir, when we sell some shares, we should get money into our bank accounts. वो STT कट के अपने अकाउंट में पैसा आता है. तो STT नहीं पे करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है. You're getting my points? So there is no option called STT I will not pay.
When I sell the share, they deduct STT and transfer the money to us. Clear, everybody? Chalo. Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which what is paid? We will tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. So if we get a capital gain of 1,30,000, please pay tax only on 30,000. At what rate? 10%. If you get a capital gain the whole year only 60,000, then there is no tax at all. If you get 1,10,000, pay tax only on 10,000. At what rate? 10%. If you get 6 lakhs, pay tax only on 5 lakhs. If you get 1,90,000, 90,000, you got only 90,000. No tax. Clear, everybody? And this concept is given by section 112A. ये क्या है बेटा? 112. वो क्या है? 112A. समझ में आ रहा है सर बात? Everybody getting clarity on this point? So what is section 112? General rate for what? Long term capital gain. क्या है general rate? अब जनरल रेट का कोई एग्जाम्पल बोलो, क्या आ सकता है उसमें? कोई प्रॉपर्टी भेजे, कुछ नेकलेस भेजे, बोलो यार, कुछ अनलिस्टेड शेयर्स भेजे यार, बोलो यार. चलो, व्हाट इज सेकंड पॉइंट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज on which then we'll pay tax at the rate of on amount exceeding 1 lakh. So getting clarity? Speak out. And what they told in the law very clearly is that in case of equity shares, STT should have been paid at the time of both purchase as well as sale. And for equity oriented fund and business trust, STT should be paid at the time of sale. That's enough. Then we'll apply this tax rate concept. What is the tax rate? 10% on amount exceeding 1 lakh. Are we clear? Everybody? Next to see. Other side, what we have here? Short-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid. Tax at the rate of 15%. Section 111A. सर मैटर पूरा सेम है सर, मैटर पूरा का पूरा सेम है. फर्क क्या है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म का क्या रेट है? 10%. That too only on amount exceeding 1 lakh. Short term, सीधा 15%. Nothing called exceeding 1 lakh, exceeding 50,000, exceeding 2 lakhs, कुछ भी नहीं है. सीधा का सीधा क्या रेट है बेटा? 15%. That's why yesterday I told you. Special rates we'll talk. Special rates. Are you understanding, everybody? So speak out. All of us getting clarity on this point, everyone. Chalo. What is the general rate for long-term capital gain? 20%. But if there is a long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid, will tax at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Same case, but not long-term, but it is short-term. Then we'll pay tax at the rate of 15% on amount exceeding 0. Sir, clear है? Everybody? Last point you see. हो गया, ये टेबल से काम खत्म. नॉर्मल रेट्स. नॉर्मल रेट्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज नॉर्मल रेट? स्लैब रेट्स. समझ में आ रहा है सर? एवरीबडी? So general rate for short term capital gain is slab rate. General rate for long term capital gain is 20%. Special case LTCG is 10% on amount exceeding 1 lakh. That special case, same point.
but it is short term. Then what rate? 15%. Exactly. Are we getting clarity on this point? दोस्तों बोला हूं? Everybody, very important concept, my dear friends. 99.9999% question will come in the exam. इसके ऊपर. Sir, clear है? Everyone, take this chart in the book. Come on. So what is the general rate for long-term capital gains? 20%. Which section beta? 112. Special case वाला 112A. सेम केस शॉर्ट टर्म है तो 111A. और एक बार ऑब्जर्व करो सर, सब ऑब्जर्व करो एक चीज, सब केस में सेक्शन नंबर लिखा बट लास्ट केस में नंबर नहीं है कुछ. क्यों? वो स्लैब रेट्स पे जा रहा है. वो स्लैब रेट तो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आया है. वो दैट इज नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर. यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सम रेट्स आर गिवन बाय फाइनेंस एक्ट, सम रेट्स आर गिवन बाय इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ. जहाँ पे हम 112 115 बीबी ये सब बोल रहे तो एक्ट में ही रेट दिया है. क्लियर राहुल? हाँ बोलो बेटा. किस पे? हाँ डिडक्ट कौन करता है? डिडक्ट कोई करता नहीं है. मैं तो एसटीटी का बात कर रहा था. एसटीटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है. कौन सा? सी एसटीटी इज ओनली हार्डली 0.01 0.02%. वो छोटा सा अमाउंट है बस. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. स्लैब रेट क्यों लगती है? 10% लगती है ना. अपन सेकंड केस की बात कर रहे हैं ना. हाँ बट कैपिटल का स्पेशल रेट है ना. ये अपन स्पेशल रेट लगाएंगे तो फिर नॉर्मल रेट लगेगा क्यों? समझो एक आदमी के पास, सिर्फ मेरे पास बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है. सेकंड वाला कैपिटल गेन भी है. बिजनेस इनकम में टैक्स कैसा पे करूंगा मैं? स्लैब रेट्स. कैपिटल गेन में टैक्स कैसा पे करूंगा? 10%. बराबर ना यार. दो टैक्स क्यों पे करूंगा? स्पेशल रेट आए तो नॉर्मल रेट आएगा ही नहीं ना. यस मैडम, हो गया? हाँ बोलो ना. करेक्ट. नहीं, इसको शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं हम. स्पेशल कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग करके. जो कैपिटल गेन में आएगा वो बोलता है 2.5 लाख के नीचे तो टैक्स मत भरो, कोई बात नहीं, शिफ्ट कर सकते. बट वो शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट अपने कैजुअल इनकम है ना, 115 बीबी वाला, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. कैपिटल गेन को अप्लाई कर सकते हो. बराबर. गुड. गुड क्वेश्चन. सब क्लियर है? दोस्त कुछ डाउट है? बोलो ना. कुछ नहीं? ठीक है.
short-term capital gain on sale of building. नवा रेट पे ही होगा, बराबर ना? समझ में आ रहा है सर? चलो नीचे एक नोट लिखो बेटा, राइट वन नोट, राइट वन नोट. Write one note. In case of LTCG, in case of LTCG on equity shares, in case of LTCG on what, sir? Equity shares, comma, STT should have been paid. STT should have been paid STT should have been paid both at the time of acquisition, both at the time of acquisition, both at the time of acquisition, both at the time of acquisition and transfer, both at the time of acquisition and transfer. Full stop. Continue. In case of units of equity oriented fund, in case of units of equity oriented fund, in case of units of equity oriented fund or units of business trust, in case of units of equity oriented fund or units of business trust, come on, STT should have been paid STT should have been paid at the time of transfer. STT should have been paid at the time of transfer. Sir, clear hai? Everybody? See here, special rates. You please see here. 112. What is 112? Long-term capital gains. Bracket में क्या लिखे दे बेटा देखो. Other than LTCG taxable as per which section? 112A. What rate? 20%. But next line you see. Long-term capital gain on transfer of equity shares or units of equity-oriented fund or units of business trust on which STT is paid. Tax at what rate? 10% on long-term capital gain more than 1 lakh. Long-term capital gain, see this line? Long-term capital gain up to 1 lakh is what, sir? Exempt. Exceeding 1 lakh is taxable at 10%. Clear now? Everybody? Same story. Short-term, equity shares, equity fund, business trust, सब कुछ same. But क्या rate है बेटा? 15%. और ये तो आपने पता है 115 BB क्या रेट है? फ्लैट 30%. 115 BB पता है क्या रेट है बेटा? एग्जैक्टली. समझ में आ रहा है टैक्स स्पेशल रेट्स? एवरीबॉडी? बेटा बोलो. 1% Mr. A. This gentleman has got business income 10 lakhs. Long-term capital gain on sale of building 5 lakhs. Long-term capital gain on sale of equity shares STT paid. How much figure? 4 lakhs. So clear? Next. Lottery income 6 lakhs. Compute tax payable. करो बेटा.
Business income. Age 45. Normal. Come on, last 2 minutes. हाँ बेटा. Yes. Of course. HCC तो पूरा टैक्स कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में ऐड करने का है सेस तो. ठीक है बेटा. क्या आंसर बेटा? 4,39,400. आपका भी आंसर वही है क्या? सेम. सेम. सबका सेम. क्या गौरव हुआ नहीं अभी तक? Yes, madam. What is the answer? Same answer.
सही है तो सबका ठीक है, नहीं तो सबका गया। चेक कर लेते आंसर। चलो बेटा क्या करेंगे हम, ये 10 लाख पे टैक्स आएगा 1,12,500 बराबर है। ये 5 लाख पे टैक्स आएगा 1 लाख बराबर है। दिस इज बिकॉज सेक्शन 112। इस पे टैक्स आएगा 30,000 बिकॉज ऑफ सेक्शन 112 ए। 30,000 कैसा है बेटा, और अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख ऊपर कितना है 3 लाख। 3 लाख का क्या परसेंट है बेटा 10%। सर क्लैरिटी आ रहा है सर, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन ओनली बिकॉज सी व्हेन यू लर्न ए कॉन्सेप्ट, व्हेन यू apply that concept in a question, in a problem, you get more clarity. Clear? चलो next 1 लाख कौन सेक्शन है 115। चलो टोटल 4 लाख HEC सॉरी 4 लाख बराबर है क्या, गुड दैट्स इट सर। आई होप वी गॉट फुल क्लैरिटी सर। राहुल समझ में आ गया ना, जब स्पेशल रेट आएगा तो नॉर्मल रेट आएगा नहीं, स्पेशल रेट तभी आएगा तो स्पेशल केस में कवर्ड है तो तभी आएगा। और अभी तक हम स्पेशल केस 4 सीखे अभी, मतलब 5 सीखे एक्चुअली, 112, 112A, 111A, 115BB, 115BBE। सर क्लियर है। 112 क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट, क्या रेट है जनरल रेट 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज on which STDs pay tax at what rate 10% on amount exceeding, पूरा पे लगेगा 10%, amount exceeding 1 लाख only tax will apply। सेम केस लॉन्ग टर्म नहीं है तो शॉर्ट टर्म है तो क्या लगेगा 15%। क्लियर है सबको, सबको आया आंसर, सेम आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, गुड। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टेलिंग बट 1-2 people are not replying, प्लीज। हाँ मैडम बोलिए, बिजनेस इनकम। हाँ आ रहा, और वहीं पे आ रहा हूँ मैडम, 5 मिनट, 5 minutes। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ओनली। Intentionally I did not talk about surcharge in that concept because I have a reason why I did not talk about surcharge। अभी सुनो, actually I was waiting since last 2 days, कब आएगा ये दिन स्पेशल केस डिस्कस करने के लिए। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब स्पेशल केस अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अभी सुनो ध्यान से, लिसन माय डियर फ्रेंड्स। सर इमेजिन ए पर्सन हैज गॉट बिजनेस इनकम ऑफ 40 लाख। कितना बिजनेस इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ऑन सेल ऑफ समझो 4 करोड़ है। ठीक है, और लेट्स से फॉर अ स्मॉल चेंज I'll put it as 60 lakh। ठीक है, टोटल कितना हुआ 4.6 करोड़। सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा या नहीं, बोलो क्या रेट लगेगा। सरचार्ज का लिमिट्स क्या है बेटा, बोलो सरचार्ज लिमिट क्या है। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, कितना परसेंट है 10%। मोर देन 1 करोड़ डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, व्हाट इज द रेट 15%। मोर देन 2 करोड़ डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ 25%। मोर देन 5 करोड़ 37%। So technically here what should be the rate 25%, correct my dear friends, but law says please apply 15% only। Please apply what rate 15% only। Now what is the logic for this concept, listen carefully।
where the total income, including what, sir? Dividend income and capital gain chargeable to tax under which section? 111A, 112, 112A. पता है अपने को ये पूरा? Is more than what? Does not exceed? What is the surcharge rate? Speak out. Second case. Total income, including dividend income and capital gain, chargeable tax on section 111A, 112 and 112A is more than 1 crore but does not exceed कितना परसेंट है? यहाँ तक क्लियर है? अभी थर्ड केस देखो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टोटल इनकम क्या लिखा वहां पे? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर 111A, 112 and 112A is more than 2 crore but does not exceed is what rate? 25%. बराबर है सर? बोलो हमने क्या किया यहाँ पे? 60 लाख 4 करोड़ टोटल चार्ज 4.6 करोड़ से ये 2 करोड़ के ऊपर है सर, ये 2 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के नीचे है. बट हियर व्हाट डिड दे से? एक्सक्लूडिंग. करेक्ट है सर? स्पीक आउट. नाउ सी व्हाट दे, सी द एग्जांपल हियर. डिविडेंड इनकम 51 lakh, short term capital gain 111A 44 lakh, long term capital gain 42 lakh, long term capital under section 112A 55 lakh. other income कितना है? 3 crores. So getting my point everybody? Speak out. Then what did they say in the law is, see here, surcharge at what rate? 15% would be levied on income tax on dividend, STCG, LTCG and also LTCG, but 25% would be levied on the income tax computed on other income of how much? 3 crores. Getting clarity? Sir, let me give a proper clarity on this point. See for example, one person Mr. A, उसके बाद बिजनेस इनकम है 40 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20 लाख. पूरा कितना हुआ? सरचार्ज लगेगा? स्पीक आउट. कितना लगेगा? 10%. यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आया है? केस नंबर 1. केस नंबर 2, मिस्टर बी, उसने अब इसका बिजनेस इनकम है 70 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख, टोटल 110 lakhs. सरचार्ज लगेगा? कितना लगेगा? 15%. यहां तक क्लियर है दोस्तों? बोलो एवरीबॉडी. अभी सुनो ध्यान से. one person Mr. C, his business income is 1.2 crore. 1.2 crores. or let's say business income is 2.2 crores. Long term capital gain 1.4 crores. Total 3.6 crore. That means what? This is more than 2 crore. More than 2 crores. Does not exceed 5 crores. What is surcharge rate? 25%. But law is telling 25% surcharge you apply only on what income? Business income. But for capital gain, please apply surcharge only at 15%. Please apply only at 15%. So getting clarity on this point everybody? Speak out. इसका मीनिंग क्या है बोलूं? सुनो ध्यान से. One line I'll close this. इतना स्टोरी कहानी सुने ना. In one line I'll tell you the simple answer. For dividend income, for 112, 112A, 111A, surcharge cannot be more than 15%. Surcharge cannot be more than. हो गया आंसर. You're getting my point everybody? Speak out. Everyone. अभी सुनो वापस देखते हैं इधर. चलो. Where the total income excluding dividend 111A, 112, 112A is more than what? 5 crores is what rate? 37%. But नीचे लाइन देखो. Rate of surcharge on income tax payable on dividend 111A, 112, 112A is not exceeding what rate? 15%. तो technically 25%, 37% rate तभी आएगा अगर other income is more than 2 crores.
Other income is more than 5 crores. You're getting my point? Speak out. Now I'll ask you one question, बेटा. अब सोच के मुझे बताना जवाब इसका. ठीक है? 1% Mr. X. His other income is 1.4 CR. Long-term capital gain is, let's say, 1.6 CR. Total कितना हुआ? 3 crores. सरचार्ज कितना लगेगा इस पे? इस पे तो 15% ऊपर लग ही नहीं सकता है. अरे बोलो यार, इस पे कितना लगेगा? इस पे भी लगेगा 15%. समझ में आ रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल नाउ मिस्टर वाई, if other income is 2.4 crores, long term capital gain 1.6 crore, टोटल कितना हुआ? 4 crores. इस पे सरचार्ज लगता है 25%, बट इस पे सरचार्ज लगता है 15%. समझ में आ रहा है सर? लास्ट केस मिस्टर जेड, other income 5.4 crores, long term capital gain 1.6 crore, टोटल हो गया 7 crores. इस पर सरचार्ज लगता है कितना रेट? बट इस पर सरचार्ज लगता है कितना रेट? 37%. दैट्स इट. समझ में आ रहा है सर सबको? Everybody clear with this point, all of us? Right? Now see. Last case, what is written here? Is the total income including dividend income, capital gain, सब कुछ मिलके 2 करोड़ को ऊपर है, तो कितना लगता है सरचार्ज सर? 15%. तो basically you have to understand that 25-37 story will come only when other income is more than 2 crore or other income is more than 5 crores. Sir, getting clarity? Speak out. Sir, everybody is clear? Speak out. Come on, case 1. Total income greater than 50 lakh. Does not exceed. कितना परसेंट है बेटा सरचार्ज? 10%. सब बराबर है? अदर साइड टोटल इनकम मोर देन 1 crore. Does not exceed. कितना परसेंट है सरचार्ज? यहां तक नॉर्मल स्टोरी है. स्पीक आउट. अदर इनकम is more than 2 crore. Does not exceed. Surcharge the rate of 25% on other income other than dividend 112, 112A, 111A. So for these 4, surcharge the rate of 15% only. समझ में आ रहा सर? बेटा बोलो एवरीबॉडी. लास्ट केस क्या लिखेंगे हम लोग? अदर इनकम ग्रेटर देन सच एट द रेट ऑफ 37% on other income excluding dividend 112, 112A, 111A. For this such at what rate? 15% only. So getting clarity everybody? Speak out. So are we clear everybody? So what is the point you have to keep in mind now? For dividend, for 112, for 112A, for 111A, what is the answer? Such a rate is 15% only. So 25% story तभी आएगा अगर other income is more than 2 crore. 37% तभी आएगा अगर other income is more than 5 crores.
सब फुल क्लैरिटी आई सबको? बोलो बेटा, क्वेश्चन पूछो, 4-5 क्वेश्चन बोलेंगे आप लोग आंसर। चलो, ये टेबल हम लिखते हैं बुक में, बट मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, पहले उसका जवाब दो, फिर लिखेंगे हम लोग, ठीक है? 1% मिस्टर एक्स, बिजनेस इनकम 1 crore, LTCG 50 lakh, टोटल 1.5 crore। बोलो बेटा सच कितना लगता है? बोलो किस पे? सच है व्हाट रेट? और 1.5 crore विल अप्लाई व्हाट रेट? 15%। यार बोलो यार, स्पीक आउट एवरीबॉडी। मिस्टर वाई, बिजनेस इनकम 2.3 crore, LTCG 70 lakh, टोटल 3 CR। बोलो, इस पे सरचार्ज 25% और इस पे सरचार्ज, दैट्स इट। आई थिंक यू गॉट अ क्लैरिटी नाउ। In case of dividend income, in case of 112, in case of 112A, in case of 111A, surcharge rate cannot be more than 15%। क्या क्लियर है? इसलिए ये लोग ने क्या किया देखो यार, ये टेबल पे कैसा बनाया टेबल। ये फर्स्ट लाइन देखो, सी द फर्स्ट केस, 50 लाख के पास क्या लिखे देखो, इंक्लूडिंग डिविडेंड। इंक्लूडिंग लिखे ना यहाँ पे सर, 10% में इंक्लूडिंग लिखे। फिर देखो 15% में लिखे वापस इंक्लूडिंग। अब 25% जब आएगा तो उसमें लिखेंगे एक्सक्लूडिंग, बिकॉज फॉर अ डिविडेंड, फॉर 112, फॉर 112A, 111A, such as cannot be more than 15%। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? लास्ट केस वापस लिखेंगे एक्सक्लूडिंग, देखो एक्सक्लूडिंग 37%। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखे यहाँ पे, टोटल इनकम इंक्लूडिंग एवरीथिंग is more than what? 2 crore and is not covered in third and fourth case. What rate? 15%। Are we getting clarity everybody? बेटा बोलो बेटा, समझ में आया सबको केस? वेरी वेरी गुड। अभी लिखो ये बुक में, कितना इंपॉर्टेंट है ये। यस मैडम बोलो ना, क्या डाउट है? तो कितना हुआ? 1.2 करोड़। कितना लगेगा सर चार्ज? 15%। दोनों को साथ में करेंगे 15%। अरे अलग अलग इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसका 20% कैलकुलेट करेंगे, उसका नॉर्मल रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल लेके उसके बाद सरचार्ज ऐड करेंगे ना। अगर अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तभी 25% लगेगा। अगर अदर इनकम 2 करोड़ के नीचे है तो 15% लगेगा ना, दोनों मिलके। मैं वो एग्जाम्पल लिखा क्या यहाँ पे? मैं आप जो बात कर रहे हो एग्जाम्पल लिखा क्या मैं यहाँ पे? एक सेकंड, ये लिख दो पहले, उसके बाद आप नंबर्स बोलो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, बता दूंगा आपको, ठीक है? ये लिख दो पहले, फिर नंबर्स लेके बता देता हूँ। यही करो एग्जाम में।
हो गया बेटा लिखना? I think today we got a lot of clarity on special tax rates. बहुत इंपॉर्टेंट है यार. नॉर्मल टैक्स रेट क्या है कोई भी करेगा, एक दो सम करे तो तीसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा. बट दिस इज इंपॉर्टेंट. नो क्लियर? प्रोसीड कर सकते बेटा? बोलो. यस मैडम बोलिए. अभी आपका डाउट क्या है? नंबर्स बोलो अभी. बिजनेस इनकम 1 करोड़, एलटीसी 20 लाख, टोटल कितना हुआ? तो सरचार्ज कितना लगेगा? बोलो अभी बोलो. अरे दोनों कंबाइन करेंगे, मैं गलत नहीं बोल रहा आपकी बात. बट 1 करोड़ पे पहले टैक्स निकालेंगे, इसके ऊपर फिर टैक्स निकालेंगे 20%, पूरा टोटल लेंगे, उसके बाद तो सरचार्ज ऐड करेंगे ना 15%. और एक एग्जांपल बोलो ना. बिजनेस इनकम एग्जैक्ट टू, हाँ ठीक है. अदर इनकम मतलब एलटीसी बोल रहे हैं ना आप? अरे अदर इनकम एलटीसी बहुत फर्क है. एलटीसी जी हाँ कितना है? 30 lakhs. कितना हुआ पूरा टोटल? 2 point, right. Did your income other than 112, 112A, 111A, ये तीनों को छोड़ के बाकी का इनकम 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हुआ क्या? नहीं. तो कितना लगेगा सरचार्ज? 15%. तो इस पे भी 15% ही लगेगा, इस पे भी 15% ही लगेगा. समझ गए? अब बोलो एक और क्वेश्चन. बिजनेस इनकम कितना बोले आप? 1 करोड़. एलटीसी कितना बोल रहे? 1 करोड़. टोटल कितना हुआ? 2 करोड़. समझ में आ रहा है ना यार? हाँ बोलो यार. ऊपर जाना क्या? कौन सा वाला? चार्ट से पहले है क्या? रुक जाओ. आप बोलो ना. सेकंड वाला केस बोल रहे क्या? अदर इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ के ऊपर है क्या? तो इस पे कितना लगेगा सरचार्ज? 25% लगेगा. पर इसको तो 15 ही लगेगा ना. समझ गया मेरी बात? अगर ये सिर्फ 2 करोड़ ही होता तो क्या होगा? फिर 15% लगता है पूरे पे. अगर 2.4 करोड़ से मेरे एग्जाम्पल में, तो इसलिए क्या हुआ वहां पे? When it is 2.4 crores, that means what? Other income is more than 2 crore. When other income is more than 2 crore, for other income surcharge at what rate? 25%. But for LTCG what rate? 15%. समझ में आया सर? When I say other income, you might ask, other income में क्या क्या आएगा सर? Salary, house property, PGPP, other sources, सब कुछ आएगा ना यार. LTCG, STCG और डिविडेंड छोड़ के सब कुछ आएगा. समझ में आ रहा है मेरी बात? बेटा बोलो. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर जवाब दो आप लोग. दोनों ठीक है. एग्जाम्पल लेंगे ना. बिजनेस इनकम 2.4 करोड़, LTCG ऑन बिल्डिंग इसका भी 2.4 करोड़. कितना है टोटल? 4.8 CR बराबर. इस पे तो कुछ भी करो सरचार्ज तो 15% ही लगेगा यार. बोलो यार, इस पे सरचार्ज कितना लगता है? बस हो गया आंसर आपका. %15 हाईएस्ट लिमिट. 10 भी हो सकता है. हाईएस्ट ही बोल रहा है. हाईएस्ट तो 15% ही होता है, उसके ऊपर जाएगा नहीं. सर क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है सर? अरे 10 कब लेने का मतलब, अभी बिजनेस इनकम है 30 लाख रुपए, LTCG है और 30 लाख रुपए, दोनों मिलकर कितना हुआ बेटा? 60 लाख. तो सरचार्ज कितना लगता है? 10%. मतलब 15 के ऊपर जा नहीं सकता है यार. 112 पे, 112A पे, 111A पे, डिविडेंड पे 15% के ऊपर सरचार्ज जाएगा नहीं. और 25% तभी आएगा अगर अदर इनकम इज मोर देन
2 crore. 37% तभी आएगा अगर अदर इनकम इज मोर देन 5 crores. सर क्लैरिटी है? सर अभी तक जो कल तक हम पढ़े थे वो सरचार्ज पूरा नॉर्मल स्टोरी था वो. दैट इज द रीजन 100 टाइम्स आई टोल्ड नॉर्मल सरचार्ज रेट, नॉर्मल सरचार्ज रेट. 10 बार सुने होंगे मेरे पास ये डायलॉग, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बिकॉज स्पेशल केस हुआ नहीं था तब तक. अभी हो गया स्पेशल केस. हाँ ठीक है. अभी करेंगे ना एक क्वेश्चन, अभी करेंगे ना एक क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी सुनो. बिजनेस इनकम 2.5 crore LTCG ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. सब बिल्डिंग है तो कितना टक्के लगेगा? 20%. अरे यार 10% इज ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, वो सब है ना स्टोरी. यार बोलो यार. हाँ ठीक है, इसको समझते हैं हम 50 लाख लेंगे एग्जाम्पल के लिए. कितना होगा ये पूरा? 3 crores. अच्छा करेक्ट है. स्पीक आउट. अब बोलो कैसे टैक्स निकालेंगे इसका? फर्स्ट 2.5 करोड़ का टैक्स कैलकुलेट करो. कैसे करेंगे 2.5 करोड़ का टैक्स? अप टू 2.5 लाख नील. 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 12,500. सब बराबर. 5 लाख टू 10 लाख 20%. कितना है बेटा? 1 लाख. अबाउट 10 लाख 30%. अबाउट 10 लाख कितना है अपने पास? 2.4 crores. उसका 30% 72 लाख. बराबर है यार? बोलो यार. 73 लाख 12,500. यार बोलो. सरचार्ज एट व्हाट रेट? 25% बिकॉज अदर इनकम इज मोर देन 2 crore. अरे यार अदर इनकम मतलब अदर सोर्सेस नहीं है. अदर इनकम मतलब अदर देन दैट कैपिटल गेन. अदर इनकम मतलब अदर सोर्सेस नहीं है बेटा. अदर इनकम मतलब अदर देन दैट कैपिटल गेन. कितना है 75%? 18,28,000 टोटल. बोलो. रखो एक साइड में इसको. 50 लाख का टैक्स एट व्हाट रेट? अंडर सेक्शन 112. बराबर है यार? बोलो यार. सरचार्ज एट व्हाट रेट? 1 लाख. $50,000. टोटल 11 lakhs. कितना है बोलो? $1 crore 2 lakhs 4 lakh. That's it. आगे समझ में दोस्त? हाँ सिंपल. इसे 15% लगता है, 25% लगता है, तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करो, टोटल लेके फिर से ऐड करो. उतना ही तो बात है. सर क्लियर है सर? कभी कभी उनको लगता है कि इसको स्क्वीज करते थोड़ा एग्जाम में, तो बस ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में. अपना दिमाग क्या बोलता है? 3 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है, 25% सरचार्ज लगा भी तू उसको. समझ गया ना यार? बट हम टेम्प्ट नहीं होना चाहिए वहां पे. अपना दिमाग बोलना चाहिए भैया कैपिटल गेन पे कोई भी सिचुएशन में 15% ऊपर सरचार्ज जा ही नहीं सकता है. मैक्सिमम रेट है 15% सरचार्ज. फॉर दैट 112, 112A, 111A एंड फॉर दैट डिविडेंड्स. क्लियर है सर? सर एवरीबॉडी. अब एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करें ना यार, यहाँ पे ये जो बंदा एग्जाम्पल दिया वो देखो ना यार. बस देखना ऐसे एक बार. देखो क्या दिया इन्होंने. डिविडेंड 60 लाख बराबर. एसटीसीजी 50 लाख. एलटीसीजी 42 लाख. 112A 65 लाख. अदर इनकम. तो सरचार्ज एट 15% वुड बी लेवीड ऑन द इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, एसटीसीजी, एलटीसीजी और ये एलटीसीजी. करेक्ट है? एंड 37% ऑन दैट 6 करोड़. क्लियर है एवरीबॉडी? एक्सीलेंट. एग्जाम्पल लिखना है क्या? लिख लो.
See, if I want, I would have told this capital gain story when I go to capital gains chapter. But when we learn that after 15 days or 20 days, that time when I tell you surcharge rate iska aisa hota hai, that becomes illogical for you. You cannot correlate. That's why I taught you that concept now only, so that you get a clarity when surcharge rate, what rate will come. फुल क्लैरिटी आया अभी? गुड. हो गया बच्चों? अच्छा, क्लियर एवरीबॉडी? बेटा बोलो क्लियर है? चलो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दो. या टेल मी गाइस. सो वन पर्सन हैज गॉट इनकम फ्रॉम सैलरीज 60 लाख. ठीक है? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 130 लाख. सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, लिखो मत, कुछ भी सॉल्व करने का नहीं है. इनकम पीजीबीपी हाउ मच सर? 130 लाख. क्लियर है सर? एंड ही हैज गॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30 लाख. LTCG on building 1 crore. LTCG on equity shares STT paid 30 लाख. बोलो बेटा, सिर्फ मुझे ये बताओ कि टैक्स कैसा लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा? बोलो. फर्स्ट केस पे स्लैब रेट्स बराबर है. सरचार्ज बोलो 25%. क्या है यार, आप क्या बोल रहे हैं यार? ये पूरा कहानी एक ही बंदे का है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है. बोलो ये तीनों के मिलकर कितना हो रहा है? ये तीनों मिलकर 2 करोड़ 20 लाख हो रहा है ना यार. एलटीसी हटा दो, एलटीसी छोड़ के बाकी पूरा 2 करोड़ 20 लाख हो रहा है ना, तो 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है ना, तो 25% लगेगा ना यार. सर तब से मैं जो क्वेश्चन पूछा अदर इनकम लिखा, मैं जानबूझ के चेंज किया क्वेश्चन अभी, सो दैट यू विल नॉट मिस आउट. क्लियर? चलो बोलो नेक्स्ट. 130 लाख पे क्या होगा? क्या होगा? हाँ सरचार्ज. इस पे क्या होगा? सरचार्ज रेट. इस पे क्या होगा? अंडर सेक्शन एंड सरचार्ज रेट. समझ में आया सर? अब 25% आएगा नहीं आएगा उसको कैसे डिसाइड करेंगे अपन? कैपिटल गेन छोड़ के बाकी सब अगर 2 करोड़ के ऊपर गया देन 25% विल कम. 5 करोड़ के ऊपर गया 37% विल कम. सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट अभी? बेटा बोलो एवरीबॉडी. चलो स्पेशल टैक्सेस हम क्या क्या सीखे बेटा? जस्ट गिव इट 2 minutes, आई क्लोज द क्लास. 2 minutes. स्पेशल रेट्स, व्हाट ऑल सेक्शंस वी लर्नड? 112, 112A, 111A, 115BB, 115BBE. बोलो बेटा 112 क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरल रेट. व्हाट इज द रेट? 20%. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? 112A क्या है बेटा?
long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity-oriented mutual fund through recognized stock exchange on which STD is paid. Will tax at what rate? 10% on amount exceeding. Same case, not long term but short term. Tax at what rate? 15%. Sir, clear? Hai? Everybody? Then 115BB. Casual income, betting, gambling, lottery. What rate? Flat what rate? 115BB. Unexplained income, unexplained investments and all. What rate? 60%. Plus surcharge? 25%. Plus cess? 4%. Effective rate? That's it. I hope we got a full clarity, sir. Everybody, sir. That is the end of story for tax rates for individual, which we are done. Few small points are left out about tax rates for company, cooperative society and all, which will complete tomorrow. And tomorrow we'll also start residential status. Clear, beta? Thank you so much. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you.